So I'm going to solve today alternative to practical of OLevel paper 4, October-November 2019, variance 41. ये paper बहुत important है. Let's talk about this paper. Question number 1. A student electrolysis 3 solution using the apparatus shown. आप नोट कीजिए कि यहाँ पर कार्बन कैथोड है, कार्बन एनोड है, and technically carbon is basically graphite. So examiner is basically using graphite as cathode and anode. और examiner graphite को क्यों as an electrode use करें? Because graphite conducts electricity and also it is inert. Okay. Part A. Complete the table. When we have aqueous copper sulfate, oxygen gas is given off at anode and colorless, odorless bubbles of gas is given off. Reaction product at cathode would be copper. Observation is pink brown solid. So pink, brown solid. Now the next is aqueous potassium iodide. Obviously, in that sense, observation is brown liquid. That indicates at anode iodine is given off. और क्योंकि एग्जामिनर ने नाम लिखा है, इसलिए बेटा हम यहाँ पर भी नाम ही लिखेंगे. ठीक है. वैसे आयोडीन यहाँ पर होना नहीं चाहिए टेक्निकली. इट हैज टू बी ऑक्सीजन गैस, क्योंकि यहाँ मीडियम एक्वस है, डाइल्यूट है. लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ पर ब्राउन लिक्विड की दी है, इसलिए मैं यहाँ पर आयोडीन लिखूंगा. ओके. एंड ऑब्वियसली पोटेशियम कैन नॉट डिस्चार्ज एट कैथोड. ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस is given off at anode. The bubbles of colorless gas. Okay. Now the next is dilute sulfuric acid. We did that in class. If bubbles of colorless gas is given off, which means oxygen gas is given off at anode. If bubbles of colorless gas is given off at cathode, which means hydrogen gas is given off at cathode. Give the test and observation to identify oxygen gas. That's easy. Insert the glowing splinter in the gas jar. Observation. Relights the glowing splinter. Okay. So that's the end of question number 1. Let's move on to the second question. Calcium carbonate has a formula of CaCO3. It reacts with dilute hydrochloric acid. So whenever these two substances react together, salt, which is calcium chloride, water, and carbon dioxide gas is given off. A student investigate the rate of this reaction at 3 different temperatures using the temperature shown. So examiner is basically changes the temperature, right? So most likely temperature is going to be the independent variable, because what we change is basically the independent variable, and at this point हम temperature change कर रहे हैं, इसका मतलब temperature is going to be the independent variable. This is your gas range or graduated gas range. This is your conical flask. This is calcium carbonate and hydrochloric acid. In each experiment, the student adds hydrochloric acid to an excess of calcium carbonate. That indicates one more thing, कि dilute hydrochloric acid is going to be the limiting reactant. इसका मतलब जो reaction control होगा वो hydrochloric acid की वजह से control होगा. The volume of carbon dioxide in B is recorded every 30 seconds.
All right, so carbon dioxide is going to be collected in a graduated gas range. What is meant by an excess of calcium carbonate? It means that it will still exist after completing the reaction. Okay. Name the two pieces of apparatus A and B. So A is basically a conical flask. And B is basically your graduated gas range. All right. The student does experiment 1 at 20 degrees Celsius. Okay. Name a piece of apparatus that can be used to keep the temperature constant. So we need to maintain the temperature. Either we can use water bath, or we can use thermostatically controlled water bath. Okay. Oh, okay. Nothing is such. Okay. Next, the student does two more experiment. Experiment 2 takes place at 40. Experiment 3 takes place at 60 degrees Celsius. So पहला जो experiment था, it takes place at 20 degrees Celsius. Second 40, then 60. इसका मतलब as temperature increases, kinetic energy of the molecule increases, and so collision frequency increases, which is why rate of reaction increases. So इसका मतलब experiment 3 का rate ज़्यादा होगा as compared to experiment 1. Now suggest two variables that the student keep constant so that the temperature is the only variable that affects the rate of reaction. By the way, rate of reaction depends on concentration, pressure, and surface area, right? Since यहाँ पर सारे के सारे substances जो हैं वो aqueous medium के अंदर हैं या liquid हैं, इसका मतलब यहाँ पर effect of pressure तो हम देखेंगे नहीं, implement ही नहीं होगा, right? So इसका मतलब either we need to make the concentration constant, and obviously concentration of hydrochloric acid needs to be constant. Second thing, आप नोटिस कीजिए मैंने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है, तो जाहिर सी बात है तीनों एक्सपेरिमेंट में जो सरफेस एरिया होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, इट नीड्स टू बी सेम. मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ. ओके. surface area of calcium carbonate must be same. So temperature पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन पे, सरफेस एरिया पे, एंड प्रेशर पे. प्रेशर हम यूज नहीं कर सकते थे, टेम्परेचर एग्जामिनर ने मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये दो लिखने पड़ेंगे एग्जामिनर को. ठीक है. The student plot a graph of the result. Okay. Now y-axis पे volume of carbon dioxide, x-axis पे time in seconds. Examiner is looking for an answer in which describe how the graph are used to decide which experiment has the fastest rate. Fastest rate means reaction is going to be finished in a shorter period of time. So fastest rate means shortens the time. And fastest rate means shortens the time. First thing. Second thing, more gradient. और more gradient हमें कैसे मिलेगा? More steeper curve. Okay. So in part 1 describe how the graph are used to decide which experiment has the fastest rate. तो आप note कीजिए
This experiment has the most steepest curve. Okay. And this experiment has the least steeper, right? So हम यहाँ लिख सकते हैं the more steeper the gradient, the faster the rate of reaction. हम इसमें एक चीज और भी तो बता सकते हैं, आप नोट कीजिए कि ये रिएक्शन क्विकली कंप्लीट हो गया है बिकॉज इट टेक्स शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? ठीक है जी, ये यहां पर आके कंप्लीट हो गया। ओके, जबकि एक्सपेरिमेंट 1 जो है इट टेक्स मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, सो यहां से शॉर्टन टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लिक हो रहा है कि ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर और इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। ओके, so shortens the time period, faster the rate of reaction. Write a number in each box of the graph to identify experiment 1, 2, and 3. Obviously, this is going to be the third experiment because it takes place at 60 degrees Celsius. इसका सबसे ज्यादा होगा, उससे कम 2 होगा और सबसे कम 1 होगा। ये रिएक्शन हो रहा था 20 पे, ये रिएक्शन हो रहा था 40, ये 60, तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा और इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम। State how the graph shows that the reaction stops because जाहिर सी बात है ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है ग्राफ तो इसका मतलब रिएक्शन फिनिश हो गया, राइट? The graph becomes level off or horizontal. Why do the reaction stop? Reaction इसलिए stop हो गया क्योंकि reactants जो थे वो खत्म हो गए। अब कौन सा रिएक्टेंट खत्म हो गया ये डिसाइड करना है। सो देखो मैंने आपसे कहा था कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, तो इसका मतलब जो सबसे पहले चीज खत्म होगी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिनिश हो गया इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गया। ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड has been used up because it is a limiting reactant. So that's the end of second question. Let's move on to the third one. And third question is basically belongs to planning and analysis. Carbon and copper 2 oxide are both black solids. By the way, carbon and copper 2 oxide both are insoluble in water also. Copper 2 oxide reacts with dilute sulfuric acid. So when copper 2 oxide, which has a formula of CuO, reacts with dilute sulfuric acid, which is H2SO4, obviously you are going to get copper sulfate and water. Okay, carbon does not react or dissolve with dilute sulfuric acid.
And the very important aspect, because both of them are insoluble in water, but copper 2 oxide soluble in acid, carbon is insoluble in acid also. Neither carbon nor copper 2 oxide dissolved in water. Let's see, बोल दिया उसने खुद भी, ठीक है. A mixture contain carbon and copper 2 oxide only. Plan an experiment to produce a sample of pure carbon from the mixture. So I need to extract pure sample of carbon from the mixture. So सबसे पहली चीज क्या है मेरे पास? Dilute sulfuric acid है, distilled water है. Any apparatus usually found in the chemistry laboratory. No other chemicals are available. How copper 2 oxide dissolves in dilute sulfuric acid, how to separate carbon, how to purify carbon, observations occurring at each stage of the process. Chemical equations are not required. Okay. Okay. So first of all, at 50 cm cube, of sulfuric acid, in a 100 cm cube beaker, by using measuring cylinder. Okay. At known sample, at known mass of carbon and copper 2 oxide into the beaker, containing sulfuric acid. As per examiner instruction, copper 2 oxide can react with sulfuric acid, but carbon cannot. So as a result of reaction, we need to stir the mixture by using glass rod. जब मिक्सचर को स्टर किया कर लिया जाएगा तो उसके बाद filter this solution or filter this mixture. Carbon is trapped on the filter paper. And obviously it will serve as a residue. Will trap on the filter paper. While copper 2 sulfate as filtrate is collected in a conical flask. Next, wash the residue with distilled water. Residue means carbon. So wash the carbon with distilled water. And then we need to dry it on the filter paper. So dry the residue. On the filter paper.
Oh, okay. इसमें एक चीज देखो, एक चीज एग्जामिनर ने बोली थी कि ऑब्जर्वेशन देनी है, राइट? सो ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब ये रिएक्शन होगा और मैं सोल्यूशन को स्टर करूंगा ग्लास रॉड से, तो मुझे ब्लू सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, stir the mixture by using glass rod and blue solution and a black solid is formed। ठीक है, ये पॉइंट इसमें ऐड करना है, बाकी तो सारी चीजें ठीक है। जबकि यहां पर भी लिख सकते हैं आप, while blue copper to sulfate as filtrate is collected in a conical flask, तो ये भी लिख सकते हैं आप। rest is fine, okay? So that's the end of question number 3. Let's start question number 4. A student is provided with 3 solutions: aqueous zinc sulfate, aqueous copper 2 sulfate, aqueous calcium nitrate. So we know we have sulfate and nitrate ions, we have zinc, copper, and calcium ions. Okay. The student tests 3 aqueous solution by adding each reagent shown in the table. Record the observation. Write no reaction where appropriate. So when you add when you add aqueous NaOH in the zinc sulfate, obviously white precipitates are formed. In excess aqueous NaOH, white precipitates are soluble. Giving colorless solution. Now when you add barium nitrate and dilute nitric acid, obviously you will get the white precipitates of barium sulfate. But when you add aluminum and aqueous sodium hydroxide and heat, no reaction, because यहाँ पर nitrate ions available नहीं है. Okay. Aqueous copper 2 sulfate. When you add few drops of aqueous sodium hydroxide, light blue precipitates are formed. Light blue bolo या blue precipitates bolo, it doesn't make any difference. When you add excess aqueous NaOH, precipitates remains insoluble. So light blue precipitates remains insoluble. Now इस compound में sulfate ions available है, so when you add barium nitrate, obviously white precipitates of barium sulfate are formed. And since this salt doesn't have nitrate ions, इसका मतलब ये यहाँ पर nitrate का reaction नहीं देगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा no reaction. Okay. Now when we add aqueous NaOH in calcium nitrate, white precipitates are formed. And obviously it will remain insoluble. When you add barium nitrate in it, obviously this salt doesn't have sulfate ions, so it will not give you any sort of test. So I'm going to write no reaction. See, you have nitrate ions, so when you add aluminum and aqueous sodium hydroxide and heat it, obviously ammonia gas is given off. Test for the gas. Combines with red litmus. Result of the test, red litmus turns blue.
So that's the end of this question. Let's move on to the next one. Oh my goodness, question number 5. Solution J is bleach. Bleach का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोरेट, फॉर्मूला होता है NaClO और उसका नाम होता है सोडियम क्लोरेट 1. A student does an experiment to determine the concentration of sodium chlorate 1, that is the bleach. The student transferred 25 cm cube of J into the conical flask using a pipette. Look, this is 25.0 cm cube. इसका मतलब accurate measurement is required, which is why we are using pipette. Now, why does the student use the pipette instead of measuring cylinder? Because accurate volume is required. Because accurate volume is needed, so we use pipette. Next, which other piece of apparatus could be used to measure 25 cm cube of J? Obviously, in order to get the accuracy, instead of pipette, I'm going to use burette. The student adds excess of aqueous sodium iodide. By the way, sodium iodide एक reducing agent होता है, and it has a colorless solution. As a result of reaction, iodine is formed, and iodine has a brown solution, guys. The amount of iodine produced can be determined by titration with aqueous sodium thiosulfate. By the way, दो चीजें हैं. पहली, ये जो iodine है आपके पास, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है, इट्स बेसिकली योर रिड्यूसिंग एजेंट. सो टेक्निकली जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन इज गोइंग टू बी रीडॉक्स. So it's a redox titration, okay? The concentration of sodium thiosulfate is 0.05. L is put into the burette, यानी sodium thiosulfate जो वो burette के अंदर है, run into the conical flask until the end point is reached. One thing, what sort of suitable indicator we can use in this titration? Always remember, जब भी iodine और sodium thiosulfate का reaction होता है, starch is going to be the indicator, because with iodine blue black color, and obviously after the reaction blue black color turns colorless. So end point तुम्हें कैसे पता चलेगा? blue black से colorless हो जाएगा, ये तुम्हारा end point होगा. इससे तुम्हें end point पता चलेगा कि कब आया. Why is it wrong to wash out the burette with water immediately before filling it with L? जाहिर सी बात है, अगर आपने burette को water से wash किया और उसके बाद उसमें L इंट्रोड्यूस किया, यानी सोडियम थायोसल्फेट इंट्रोड्यूस किया, तो वो सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करके सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देगा. So what we can write here is it changes the concentration of sodium thiosulfate if burette is washed with distilled water. Okay. 3 titrations are done. The diagram shows part of the burette and the liquid level at the beginning and end of each titration. So initial burette reading is basically 0.0.
Final butyrating is 23, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 23.4. So difference is going to be 23.4. Second butyrating is 24.5678. Final butyrating is 49.2. The difference is going to be 24.4. Third butyrating is 10.0. Then 33.6. So difference is going to be 23.6. So best titration results are going to be first and third, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 0.1 का डिफरेंस है. In order to determine the average, 23.4 plus 23.6 divided by 2, you will get 23.7 cm3. Okay. Calculate the number of moles of sodium thiosulfate in the average volume of this. So I know the concentration, I know the volume, I can find the moles. So 1000 cm3 of Na2S2O3, that is sodium thiosulfate, contain 0.05 moles. So अगर हमारे पास 23.7 cm3 था एवरेज वॉल्यूम, उसमें कितने मोल्स होंगे? Let me calculate. 0.05 into 23.7 divided by 1000. So it's going to be 1.185. 23.7. Okay. Hold on. It's not going to be 23.7. It's going to be 23.5. That is 23.5, guys. एक 4 एक 6 है, तो it's going to be 23.5. It's going to be 23.5. You have to be careful while calculations, okay? Let me do it. 23.5 into 0.05 divided by 1000. So I'm going to get 1.175 into 10 to the power minus 3 moles. मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप आंसर इस फॉर्मेट पे दे रहे हैं तो तमाम कैलकुलेशन के आंसर इसी फॉर्मेट पे जाएंगे. अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.001175. तो अगर आप आंसर इस फॉर्मेट पे दे रहे हैं तो सारी वैल्यूज फिर इसी फॉर्मेट पे जाएंगी एग्जामिनर को. ठीक है, फॉर्मेट चेंज नहीं कीजिएगा. Now the next is use the equation to calculate the number of moles of iodine in 25 cm3 of K. ये आपके पास है 2 moles और ये आपके पास है 1 mole. अगर आपके पास 1.175 into 10 to the power minus 3 moles हैं, तो बताइए moles of iodine कितने हो जाएंगे? So moles of iodine is going to be divided by 2 हो जाएगा. 1.175 into 10 to the power minus 3 divided by 2. So you will get what? 5.875 into 10 to the power minus 4 moles. So हम यहाँ लिखेंगे 5.875 into 10 to the power minus 4 moles. Okay. Now the next is use the equation to calculate the number of moles of NaClO that produces the number of moles of iodine calculated in F. Obviously यह भी 1 mole है और यहाँ पर भी 1 mole है. So अगर आपने आयोडीन कैलकुलेट किया था 5.875 into 10 to the power minus 3 moles. So obviously moles of sodium chlorate 1, that is bleach, is going to be same again, 5.875 into 10 to the power minus 3 moles. आप नोट करें मैं किसी भी वैल्यू में राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ. राउंड ऑफ जब भी करना होता है एंड में जाके करते हैं. सही है, ज्यादा सेफ साइड रहती है वो कैलकुलेशन. ओके, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एमआर ऑफ NaClO. दैट्स इजी. मैंने आपसे कहा था कि ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल के जो पेपर होता है उसमें आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिलता, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस, एनाइंस, गैसेस के टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, ये सब मिलते हैं. लेकिन जब पीरियोडिक टेबल नहीं मिलता तो रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन होता है.
सो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 23 प्लस 35.5 प्लस 16 23 plus 35.5 plus 16 is going to be 74.5. 74.5. ओके आप नोट कीजिएगा कि ये जो मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं सोडियम क्लोरेट 1 के, ये आपने कितना वॉल्यूम लिया था? 25 सीएम क्यूब लिया था, ये रहा। ठीक है ना, आपने इस 25 सीएम क्यूब में ये फाइंड आउट किए, राइट? ओके, to calculate the mass of NaCl in 25 cm cube of J. So I know the volume, I know the mass, MR, I know the moles, I can find the mass. So mass of NaClO is basically 5.875 into 10 to the power minus 3 into 74.5. So into 5.875 exponent minus 3 is going to be 0.43768. 0.43768 gram. Okay. Examiner is looking for the concentration in gram per dm cube. तो भाई 25 cm cube में इतना मास है, तो अगर 1 dm cube is basically 1000 cm cube. So 1000 cm cube में कितना होगा? तो 25 cm cube में इतना मास, 1000 cm cube में कितना मास? So 25.0 cm cube of NaClO gives you how much mass? 0.43768 gram, and 1 dm cube is basically equals to 1000 cm cube. So 1000 cm cube अगर J यानी NaClO है आपके पास, so बताइए मास कितना होगा? तो multiply by 1000 divided by 25, so it's going to be hold on 0.43768 into 1000 divided by 25. So it's, oh my goodness. Am I कुछ mistake की मैंने? Hold on. Let me check the calculation again. 23.5 into 0.05 divided by 1000. So it's going to be 1.175 divided by 2. So I'll get this much amount. ये भी ठीक है, 1:1 के रेशियो की वजह से ये भी ठीक है, 74.5 भी ठीक है. Multiply by 74.5, so it's going to be 0.0437 into 100,000 divided by 25. So it's going to be 1 point. Yeah, it's fine. थोड़ा कैलकुलेटर क्रेजी एक्ट कर रहा था. 1.750 या 1.75 ग्राम पर डीएम क्यूब. अच्छा, अब हमें कैलकुलेशन करनी है मोल पर डीएम क्यूब. तो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, एक ग्राम पर डीएम क्यूब इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यूब इनटू एमआर. सो मुझे मोल पर डीएम क्यूब कैलकुलेट करना है. I know the gram per dm cube, which is 1.75. I know the MR of sodium chlorate 1, which is 74.5. So let me check क्या आंसर आ रहा है. 1 divided by 74.5. So it's going to be 0.0235 mole per dm cube. ठीक है, और क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है, आप इसको 2.35 into 10 to the power minus 2 करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हम ये वैल्यू भी लिखी है, हमने ये भी लिखी, तो हमने भी इसको एज इट इज लिख दिया. ठीक है, और कोई ऑप्शन था नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. The equation for the reaction is shown. Okay, zinc is more reactive than iron, which means zinc can displace iron to ions from its salt
into iron, and therefore it is a displacement reaction, and displacement reaction is also called redox reaction. Okay. Now the next point is the student transferred 25.0 cm cube of 2 mole per dm cube iron to sulfate in the beaker. The temperature of this solution is 22 degrees Celsius. So ये आपका initial temperature है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, जब मैंने जिंक ऐड नहीं किया था. सही है. आप इसको रूम टेम्परेचर भी कह सकते हो. The student then adds excess zinc to aqueous iron 2 sulfate. पहली तो बात ये कि जिंक एक्सेस अमाउंट के अंदर है, तो इसका मतलब आयरन 2 सल्फेट लिमिटिंग रिएक्टेंट है. And start a timer, यानी stopwatch हम यूज करेंगे. The student stirs the mixture with a thermometer and measure the temperature at 1 minute intervals. Okay. Why are we stirring the mixture? Trillion times बताया आज फिर. To mix well, or to distribute uniform of heat. To mix well, or to distribute uniform heating. Okay. As soon as the zinc is added, the aqueous iron 2 sulfate, the temperature of the mixture increases. By the way, आप नोट करें जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीज हो रहा है. तो यहां से लेकर ये इंक्रीज हुआ. ओके. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस. दैट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट. आपको याद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस एंड देन डिक्रीजेस. सो व्हाट कैन यू डिड्यूस अबाउट द रिएक्शन? सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. और चलें, आप इससे जज नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैंने क्लास में ये भी पढ़ाया कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है. आप ऐसे भी जज कर सकते हैं. Why do the temperature readings in the table decreases from 1 to 6? जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर रिएक्शन जो है वो फॉल करना शुरू करता है. तो इसका मतलब यहां तक तो इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद रिएक्शन टेम्परेचर फॉल कर रहा है. दैट इंडिकेट्स कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया. दिस शोज that reaction is finished. If the student had continued to measure the temperature after 6 minutes, suggest the lowest temperature that would be reached. तो मैंने आपसे कहा था कि जब टेम्परेचर राइज होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, टेम्परेचर फॉल करना शुरू करता है, और टेम्परेचर फॉल करके हमेशा अपने रूम टेम्परेचर को अटेन करता है, यानी इनिशियल टेम्परेचर को अटेन करता है. तो इट्स गोइंग टू बी 22 ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका इनिशियल टेम्परेचर था, क्योंकि ये आपका रूम टेम्परेचर था. राइट. सो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 22.0 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि यूनिट एग्जामिनर ने नहीं लिखी हुई, इसलिए हम यूनिट भी लिख के देंगे. सो पहली चीज, टेम्परेचर राइजेस, ये याद रखना. टेम्परेचर फॉल्स, और थर्ड पॉइंट ये दिया था मैंने, रीचेस टू इट्स रूम टेम्परेचर. ठीक है. और ये हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डिड्यूस किया था. I hope it makes sense to you. Oh my goodness. Oh, let me get the values from here. So plot the results from the table on the grid
draw a line of best. Examiner is looking for the line of best fit. Extend the line until it intersect with the y-axis. ये भी बहुत important बात है. Okay. So ऐसा करते हैं कि पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज और फिर उन वैल्यूज को हम करते हैं प्लॉट. सो प्लॉट करते हैं इन वैल्यूज को. तो 1 के ऊपर 31.6 है. सो ये 30 है, ये 31 है, 32, 33, 34, 35, 36, राइट. सो ये 31 है और 31.6 है. सो दिस इज 2, 4 and 6. 31.2, 0.4, 0.6. This is going to be the point. ओके. सेकंड के ऊपर यानी 2.0 मिनट के ऊपर 30.3 है. 2 मिनट के ऊपर ये 30 है, ये 2 है और ये पॉइंट आएगा बीच में कहीं. दिस इज 30, 32 एंड दिस इज गोइंग टू बी 33. ओके. तो फोर्थ मिनट के ऊपर, सॉरी थर्ड मिनट के ऊपर 29.9 है. 28, 29.9, somewhere around here. Okay. Then fourth minute पे 27.6, 27.6 to charge. This is 27.6. Then 26.3, somewhere around here. और 6 मिनट पे 25 है. ये है जनाब 6 मिनट पे 25. सो हमसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि जनाब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएं और एक्सटेंड करें इसको वाई एक्सिस पे. तो कर लेते हैं जनाब, कोई इशू नहीं है. सही है. ये हो गया जनाब आपके पास. ये याद रखिएगा आप कि अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने बनाई है और कोई भी पॉइंट, चाहे वो एक पॉइंट हो लाइक दिस या एक से ज्यादा हो, अगर वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे नहीं आते तो उनको हम अनोमलस पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है. सो दिस पॉइंट इज बेसिकली द अनोमलस पॉइंट. और ये अनोमलस पॉइंट एक्सपेरिमेंट में एरर होने की वजह से जनरेट होता है. ओके, ये याद रखिए. ओके. ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द anomalous point. ये आ गया anomalous point. ठीक है. यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एट अ टाइम 2.5 मिनट्स. 2.5 मिनट्स पे 2.5 मिनट्स पे टाइम 2.5 मिनट्स पे टाइम. ठीक है जी. ये 2.5 मिनट्स है आपका और ये टाइम है. सो टेक्निकली इट इज 2.5 मिनट्स पे क्या पूछ रहे हैं एग्जामिनर हमसे? टेम्परेचर. ओके. सो ये हो जाएगा 29 to 46, 29.6. Okay. Now next is use the graph to determine the time at which the temperature of the mixture would be 30 degrees Celsius. Determine the time would be 30 degrees Celsius. Okay. So 30 degrees Celsius ये है आपके पास. एग्जामिनर कह रहे हैं इस पे टाइम निकालो. सही है. सो ये हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 0.1 का डिफरेंस है 1, 2, 2.2. So I'm going to write 2.2 here. Let's move on to the next page.
My goodness, there is a lot of work. Oof, 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 oof. Use the graph to determine the temperature of the mixture at 0 minutes. Okay. So I need to use the graph और 0 minute के ऊपर determine the temperature. This represents the maximum temperature that the mixture reaches in the reaction. Okay. So 0 minute के ऊपर temperature कितना reach कर रहा है, ये कर रहा है ना. So ये 0 minute है और कितना temperature reach कर रहा है. This is 32, so this is 33. So 33.0 degrees Celsius. ओके और यही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाने के लिए ना उसने ये एक्सटेंड करवाई थी लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे. ये जो लिखा था ना, एक्सटेंड द लाइन अंटिल इट इंटरसेक्ट विद वाई एक्सिस, ये इसी वजह से करवाई थी ताकि वो आपसे ये वाला क्वेश्चन कर सके और आप उसका आंसर निकाल सके. आगे चलें. नेक्स्ट इज the initial temperature of the aqueous iron 2 sulfate was 22 degrees Celsius. Calculate the maximum temperature rise after the zinc is added. So यार temperature rise determine करना है मैंने. So initial temperature, final temperature था 33.0, initial था 22 point, how much, 22.0, so it's going to be how much, 33 minus 22, oh, 33 minus 22 is going to be 11 degrees Celsius. Okay. The student uses 25 cm cube of 2 mole per dm cube iron 2 sulfate and an excess of zinc. So by using these two values, I can find the moles. An examiner is looking for the number of moles of iron 2 sulfate. So that's an easy thing. 1000 cm cube of iron 2 sulfate contain 2.0 moles. So अगर आपके पास 25.0 cm cube है, तो moles कितने होंगे, तो 2 into 25 divided by 1000, so it's going to be 0.05 moles. Okay, the heat produced means reaction जो है वो exothermic है. सही है. और इस heat produced को हमने determine करना है in kilojoules per mole by using this expression. That's a very very powerful expression. Usually हम ये expression A-level chemistry में बच्चों को करवाते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने आपको खुद दे दिया. लेकिन कुछ चीजें गौर से सुनिएगा. देखो 25 तो तुम्हारे पास वो वॉल्यूम है जो कि तुमने यूज किया था. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ यूज किया था तुमने. ये रहा वो वॉल्यूम. ठीक है, 25 cm क्यूब ऑफ आयरन 2 सल्फेट जो तुमने यूज किया था, ये वो वॉल्यूम है. तो ये वॉल्यूम ऑफ आयरन 2 सल्फेट है. लिख लो इस बात को, ज्यादा बेहतर रहेगा, याद रहेगा. पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने क्या लिखा है और क्यों लिखा है. वॉल्यूम ऑफ FeSO4. सही है. टेम्परेचर राइज तुमने यहां निकाला है 11 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये 4.2 क्या है, ये 4.2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है. वैसे वाटर की एग्जैक्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.18. एग्जामिनर ने उसको राउंड ऑफ करके 4.2 कर लिया है. ओके. मोल्स ऑफ आयरन 2 सल्फेट जो है वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. टेम्परेचर राइज आपके पास ये है. ये 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आंसर किलो जूल्स में निकालना है, जबकि हीट प्रोड्यूस जो है वो जूल्स में होती है. तो उस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं. जूल टू किलो जूल. सही है. So let me introduce the values here. This is 25 multiplied by 4.2 into temperature rise is 11 divided by 1000 and then into moles 0.05. So it's going to be how much? Oh God. 25 times 4.2 times 11. So it's going to be 1155 divided by 0.05 into 1000 is going to be 50.
So 1155 divided by answer is going to be 23.1. So 23.1 is going to be the right answer. By the way, 1 mark का पार्ट है तो आपका आंसर आने पे मार्क्स मिल जाएंगे, बट क्योंकि यहाँ हीट प्रोड्यूस क्या रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस साइन शो करना चाहिए हमें. ओके, एग्जामिनर ने नहीं किया हुआ लेकिन हमें करना चाहिए. ठीक है, बिकॉज वो कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है, उसके हो सकता है मार्क्स रख लें एग्जामिनर, हो सकता है ये पार्ट 2 मार्क्स का. तो अगर ये पार्ट 2 मार्क्स का होता तो 1 मार्क आंसर का होता, 1 मार्क इस साइन को मेंशन करने का होता, लेकिन उससे सिर्फ 1 मार्क रखा है तो आंसर इस पे मिल जाएंगे. लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को माइनस साइन भी लिखना चाहिए, just to get the credits. Okay, so that's the end of this paper, guys. Thank you very much.